Okay, let's go. अस्सलाम वालेकुम जी, आज हमारे साथ डॉक्टर सुहेब साहब मौजूद हैं। विजनरी इंसान हैं, डायरेक्टर भी हैं अलबसीर हॉस्पिटल के। यहाँ पे हमारी सर्विसेज चल रही हैं सेफ्टी को लेके। मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स में कंसल्टेंसी दी है और उनके माइंड में यही होता है कि पैसे कम लगें और लीगल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। इन्होंने कहा क्वालिटी होनी चाहिए, सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना और अच्छा सिस्टम होना चाहिए। सबसे पहले डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि इनके माइंड में क्वालिटी और सेफ्टी कैसे है। इट्स रियली नाइस टू हियर सच गुड वर्ड्स फ्रॉम यू। आपने जो बातें की इनकी वजह से हमारा मोराल भी हाई होगा और हमें इंशाल्लाह और बेहतर करने का मौका मिलेगा। जहाँ तक आपने बात की है कॉस्ट के ऊपर और क्वालिटी के ऊपर, हमने इस हॉस्पिटल में क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। छोटे छोटे पॉइंट को हमने प्रॉपरली एड्रेस किया और उसको प्रॉपरली मेंटेन किया। इसीलिए ये फायर का भी सिस्टम जो है इसके ऊपर एक खास हमारा प्रोटोकॉल था, वो हमने पूरा किया। सर ये कब इस्टेब्लिश हुआ और कैसे माइंड में आया इतना ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर? इसका सारा क्रेडिट जी मेरे वालिद साहब डॉक्टर अशरफ नून साहब को जाता है। उनका ये व्यू पॉइंट था कि इस अस्पताल की वेंटिलेशन भी प्रॉपर हो, इसमें लाइटिंग का भी सिस्टम प्रॉपर हो, ताकि इन फ्यूचर जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हैं वो हमारे कवर हों। सर आपका विजन क्या है इसको लेके? नेक्स्ट 10 ईयर में इस हॉस्पिटल को कहाँ पे देख रहे हैं? जहाँ तक इस अस्पताल के विजन की बात है, इस पूरे एरिया में इस तरह का कोई भी सेटअप मौजूद नहीं है। हमने ये सेटअप इसलिए बनाया कि जो इस इलाके के गरीब लोग, उनकी हेल्प हो, सपोर्ट हो, बेस्ट हेल्थ केयर ट्रीटमेंट मिले एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का ये व्यू पॉइंट है कि हम मिनिमम कॉस्ट पे बेस्ट हेल्थ केयर एक्सीलेंस वो प्रोवाइड करें। आप माशाल्लाह से लोगों की वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। लीडर्स जितने भी हैं हमारे, वो लोगों की वेलफेयर के लिए काम किया, अपने लिए काम नहीं किया। मुझे बताया आपने कि 130 किलोमीटर करके आते हैं यहाँ पे, तो कभी कभार थकावट नहीं फील हुई? बिल्कुल थकावट कोई नहीं। मेरा एक किस्म का इस हॉस्पिटल के साथ एफिलिएशन है। मैं चाहता हूँ कि हम हॉस्पिटल को जल्द अज जल्द इस मुकाम पे ले जाएं कि ये हॉस्पिटल सेल्फ सस्टेनेबल भी हो जाए और हम लोगों की खिदमत भी करते रहें। जब हमने ये अस्पताल शुरू किया तो इस अस्पताल में सिर्फ 2 डिपार्टमेंट्स थे। अब इस वक्त इस अस्पताल में ENT, आई, गायनी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक और जनरल मेडिसिन, ये 5 डिपार्टमेंट्स एक्टिव हैं। मैं इस मौके का फ़ायदा उठा के जो भी लोग हमें सुनेंगे या जो भी लोग हमें देखेंगे, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल सेफ्टी सॉल्यूशंस पे मैं यकदम नहीं पहुँचा। मैं घूम फिर के इंटरनेशनल सेफ्टी सॉल्यूशन पे पहुंचा हूँ। और आप तो मुझे कह रहे हैं, आई थिंक कि जिस तरह आपने हमें डील किया और आपने हमें एडवाइस दी जिस तरीके के साथ और नेक नियति के साथ हमें ये बताया कि क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है, और उसके बाद हमने इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट किया, मेरा ख्याल है इस ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट आपको जाता है। अगर आप कन्विंस ना कर पाते तो शायद हम इस काम को आगे ना लेके चल पाते। सर हम अपने नाजरीन को एक थोड़ा सा व्यू देना चाहते हैं हॉस्पिटल का, इंटीरियर भी और एक्सटीरियर भी। जी श्योर, आपको हम अपना अल्ट्रासाउंड और गायनी का डिपार्टमेंट जो है उसका विजिट करवा देते हैं। ये हमारा गायनी ऑपरेशन थिएटर है। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and
make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness